So dear student, today here again we take a topic that is significant figures, right? So what is significant figures? Before that, let me clear you about precision and the word accuracy. Is it right? So for that, let me write here in the left hand side. I think it is visible portion, clear. So suppose experimental value is 1.68. Is it right? 1.68, and this is the experimental value, and 1.68. Where is the 1.66? Where is the true? Is it right? True value. The real value is suppose 1.7. True value is 1.7. So if true value is 1.7, your experimental value is 1.68. That means you are more close to the true value. You are very much close to the true value. Is it right? And the difference for accuracy, the difference is 0.02. So this 0.02 is the resolution. Is it right? Resolution, or better we say the difference. So here, but this is done by you. Your friend also find the value of experiment and he got suppose 1.65, whereas true value is 1.7. The difference is 0.05. Is it right? So here we can say that, is it right? Here we can say that you both are very closed, but here difference is very less by you, so your resolution is more closed. That means इसमें आंसर कैसे देंगे? We'll say that, what I say, that precision and what accuracy. So you both are accurate. You both are accuracy of both of you are okay, very good. But since the difference is very less, so I will say your precision is high. The difference जितना less होगा, precision उतना ही high होगा. Is it right? So these are the two words. So keep it in mind. So here also significant figure का मतलब measurement made by any instrument are not always correct. Like 1.68. The degree of accuracy or the precision. The degree of accuracy or the precision is shown by some digits up to which the measurement has been recorded. Suppose you shown that it is 1.68. So you have shown that in how many numbers you have to write, that is in the 3 numbers, or your true value it is in the 2 number. So these numbers are known as the significant figures. So how can we write this? Rules for the significant figures are, right, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. So let me write here example. For example, 7, 4, 6, there is no 0. So I will say 3. So how many significant figures? You will say it is 3 numbers. So significant numbers are written in the digit? 3, 4, 5, some number it will be indicate. How many? 3. You can take more example. Suppose 7, okay, leave it 7. Suppose 9, 4, 6, 7. How many are there? 4. So your significant number is 4 number. Clear? All zeros occurring between non-zero and are significant. Example, let me take example. Suppose 7046. So in the 704, 0 is in between, then he will be counting as a number. So there are, you will say how many? 4 number. Is it right? Okay. I think it's very simple. All zeros to the right of the non-zero digits are, suppose example, are not significant. So keep it in mind, not. The 7, 4, 6, 0. 0 को अगर मैं right side में रख देता हूँ, so it will be not counting as a number. So I will say this is what? Only 3 number, 3 significant figure. You know why it is? Because इसमें और एक चीज़ आता है which I have not written here. I will show you this. Right? Whenever there is a change in the units. So for example, एक 0 से I think you can change like centimeter to millimeter, है ना?
So centimeter, millimeter, that is unit is changing, but the figure will be same. So whenever there is a change in the what units, there will be no change in the significant numbers. Okay, all the zeros to the right of the decimal or the left of the non-zero are not significant. For example, decimal आना चाहिए 0. Let me write example 0.07. So I think this 0 is decimal का कौन से साइड में है, राइट साइड में है, और नॉन जीरो का लेफ्ट साइड में है. So that's why this will be also not as a counting number. So here also I will say there is only one number, only 7. All the zeros to the right of the decimal point or the right of the non-zero. Yes, if I write example, suppose 0.070, है ना? This 0 is the right of it, so he will be counting as a significant number, but this 0 is left of the non-zero digit, he will be not counting. But all should be within decimal, keep it in mind. So यहाँ पे हम लोग बोलेंगे here it is 2 number. And in the number 6, please write down, which I have not written here, right? Number 6 is when there is a change in the units, there is no change in the significant number. Is it right? Yes. Like for example, 3 into 10 to the power 4, which you can write as 3 4 zeros. 1 2 3 4. Since all are to the right of this, as I told you, it will be not counting as a number. So what happened here? I can say this. Suppose 3 10 to the power 3. Suppose, है ना? So 3 में कितना आ जाएगा? So this is 3 into 10 to the power 3. So I can say this is in what? Meter, and this is in what? If it is meter, I can say 3 kilometer. So there is a change in the unit. So but the significant number will be only 1. There will be no change in the significant number in the other units. Okay. Now rounding off. Rounding off is also very important topic. What is rounding off? Whenever we write the significant figure, so in which number we have to write? In 3 significant figure or in 4? This is called the rounding off. So for that, let's see here. If 8.64 is written in the 2 significant numbers, suppose there is an answer 8.64 and you want to write that not in 3, this is 3 significant number, you want to write suppose in the 2 significant number. So how we write this? For that, third one you have to see. The third one, if it is less than 5, we all know from the childhood we are doing this. If it is less than 5, then this is written as what? 8.6 it is. Clear? But if it is more than 5, now in the example 2, right, then we have to be increase 1, so 6 becomes 7. Is it clear? But in the figure this is 8.65, but if it is not less or more, is it right? But if it is in the boundary of the 5, then what we have to do? Then we have to see the preceding one. उसके आगे वाले को देखना है. अगर वो तुम्हारा क्या है, अगर वो even है तो कुछ भी increase नहीं करना है, right? We have to see this is even, and whereas this is what? Odd. बस you have to difference देखना है. Even है, उसके आगे वाला preceding even है तो increase नहीं करेंगे, odd होगा तो एक increase करेंगे. तो 2 significant कैसे रहेगा? 8.8, because this is in the boundary, that is 5 में है. तो ये शायद हमने चाइल्डहुड में नहीं सीखा था, बट यू हैव टू लर्न दिस ईयर. क्लियर? ओके, ये तो हो गया राउंडिंग ऑफ का. नाउ वन मोर थिंग, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते वक्त, सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो तुम्हारा आंसर आएगा, उस आंसर का कितने में लिखना है, उस आंसर को देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त आंसर जो होगा वो तुम्हारा लिखा जाएगा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में लिखा जाएगा. इज इट राइट? लीस्ट डेसिमल प्लेस. मैं प्लेस लिख देता हूँ यहाँ पे. एग्जाम्पल देखो, 52.8 प्लस 46.35 इज रिटन एज 99.15, बट आई हैव टू राइट नाउ लीस्ट कितना है तुम्हारे पास. हमको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, हमको देखना है डेसिमल. आफ्टर डेसिमल देयर इज 1, सो आई विल हैव टू राइट इन द 1. सो अगर 1 में लिखना है तो फिर से वही कहानी, थर्ड वाला देखो, सॉरी 1 मतलब ये थर्ड में आ रहा है, तो फोर्थ वाला देखो 5 बाउंड्री में है और आगे वाला प्रेसिडिंग क्या है? 1 है, विच इज डेफिनेटली ऑड. सो ऑड होगा तो एक इंक्रीज करना है. सो 99.2 इज द आंसर. क्लियर?
सो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस हमको इसी सिग्निफिकेंट नंबर में लिखा जाता है आंसर्स को. कीप इट इन माइंड. ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में आंसर को लिखा जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट में लिखा जाएगा आंसर को. हाउ इट इज, सपोज दिस टू आर मल्टीप्लाई एंड आंसर इज दिस, बट हियर आई हैव टू से लीस्ट, यानी कि हमको देखना है कि कौन लीस्ट सिग्निफिकेंट है. जैसे यहाँ पे मैंने देखा था लीस्ट डेसिमल कौन है, ये. तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट. आई हैव टू राइट आंसर इन द 3 सिग्निफिकेंट. 1 2 3. फिर देखो 7 डेफिनेटली इज मोर देन 5, सो आई हैव टू इंक्रीज 1. 47 इज द आंसर. इज इट क्लियर? ओके. Error. You know the error. What is error? It's very simple. Let me explain you this. Error means there are some whenever you are not getting exact or the true value, definitely in your observation there is some error. Very simple, right? Such type of errors, like whenever we keep, like some are random error, some are systematic error. Is it right? Whenever we do this systematically, it's happening. Is it right? Random error, like random systematic error, suppose you got the answer but the answer is not matched. Is it right? That is a systematic error. And random error means it's automatically happen without your knowledge. That is called random error. For example, एक थर्मोमीटर को अगर तुमने आर्म पीट में रख के इसका मेजरमेंट किया तो तुम्हारा एरर आएगा डेफिनेटली. क्यों आ रहा है? तुमको पता भी नहीं चल रहा है क्यों आ रहा है. बिकॉज एक्चुअली हवा यहाँ से ब्लो हो रहा है, एयर इज ब्लोइंग एंड इट्स गोइंग टू मेक इट कूल, है ना. तो कुछ समझ में नहीं आता है. जैसे मान लो मैंने एक एपेरेटस सेटअप किया ऑब्जर्व करने के लिए, डिस्टेंस मेजर भी कर लिया, लेकिन उसमें भी एरर आ रहा है. क्यों आ रहा है? बिकॉज तुमने जो डिवाइस रखा है उसको प्रॉपर लेवल ऑफ सरफेस में नहीं रखा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो प्रॉब्लम आ सकता है. पैरालैक्स का प्रॉब्लम आ सकता है. सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड एरर्स आर देयर. इज इट राइट? कुछ एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में होता है. Is it right? Yes, that is called zero error, like vernier caliper, screw gauge, whatever it is. तो how we express this error? ये error को express करने का 3 प्रोसेस में हम लोग लिखते हैं. मतलब सभी error है, they all are same only, but अलग अलग तरीके से. Absolute error कब बोलेंगे? Suppose absolute error is del x. ये होता है जब true value और experiment value का difference आता है. Difference minus, that's why it is called absolute. Relative कब होता है? It is the ratio of the what? Absolute by true. Absolute by true. इसको हम लोग बोलते हैं relative error. Percentage error कब होता है? जब इसी relative को 100 से multiply करते हैं या फिर multiply this is called the percentage error. Percentage. तो these are the what? Expression of the error. अभी हम लोग देखेंगे, फाइंड करेंगे कि एरर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं. मान लो कि फॉर एग्जांपल देयर इज, मेरे पास 2 लेंथ ऑफ वायर है, दोनों को मेरे को सीरीज में रखना है. इज इट राइट? तो एक लेंथ ऑफ वायर L1, दिस इज L2. अब ये दोनों को जब मैं ज्वाइन कर दिया सीरीज में तो डेफिनेटली लंबा हो गया. इफ देर इज एरर, इफ देर इज ऑल्सो एरर, तो मेरा जो टोटल आंसर है उसमें भी एरर होगा. तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सो ड्यूरिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे कैसे किया जाएगा. जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास में एरर है, एक्सेलरेशन में एरर है, तो डेफिनेटली फोर्स में भी होगा. बट दे टू आर, दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो कैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे आंसर लिखते हैं? सो दिस आर डेफिनेटली द प्रोसेस ऑफ डूइंग द एरर. हम लोग इसमें आते हैं. इसमें here the measurement of the errors. Now we have already expressed the error. Now measurement in addition and subtraction, multiplication and division. So some theorems or the direct steps you have to learn, and that is, suppose there are 2 observation, and listen how we write the observation. We always write the observation is true plus minus absolute. Once again, true plus minus absolute of one reading, ट्रू प्लस माइनस एब्सोल्यूट ऑफ अनदर रीडिंग. सपोज जैसे मैंने बोला था लेंथ 1 लेंथ 2 है ना, 2 ऑब्जर्वेशन है और ये है तुम्हारा नेट आंसर. तो अगर आंसर तुम्हारा 2 ऑब्जर्वेशन का एडिशन है, क्योंकि टॉपिक मेरा एडिशन है, तो कैसे लिखेंगे आंसर को? आंसर का जो ट्रू वैल्यू होगा, ये तुम्हारा ट्रू है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ट्रू ऑफ बोथ द ऑब्जर्वेशन प्लस. क्यों? क्योंकि टॉपिक मेरा एडिशन है. क्योंकि सब्ट्रैक्शन के वक्त मैं माइनस लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के वक्त मल्टीप्लाई लिखता हूँ और डिवीजन के वक्त डिवीजन लिखता हूँ. सो ये होगा तुम्हारा ट्रू वैल्यू का आंसर. इज इट राइट?
Now, how to write the absolute? Keep it in mind, during addition and subtraction, absolute of the answer is equal to absolute of the first reading plus absolute of the second reading. Plus, देखो यहाँ पे भी plus है, ये ध्यान रखना चाहिए, plus. But in the multiplication and division, it is not the absolute, it is the relative. जैसे मैंने बोला था expression, तीन expression. So during addition and subtraction, absolute is equal to the absolute of the first and second, but here relative of first and plus relative of second. And you know what is relative? Absolute by the true, absolute by the true. इन दोनों relative को add करेंगे तो relative of answer मिल जाएगा, और वहाँ से तुम z del z निकाल के आराम से answer पे डाल सकते हो. Is it clear? Okay. Similarly, divisions, in the division also it is addition. So you need some example, right? So for example, I think a very simple example देते हैं. Suppose L1 is 1 plus 0.1 and L2 is 2 plus 0.2. तो total answer is अगर L1 plus L2 है तो what is the answer then? How we write this? Plus, that means addition. So during addition, true क्या हो गया? 2 plus 1 3 plus minus, I'm talking about z plus minus del z. ये मेरा आंसर है. तो आंसर को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे आएगा del z. So del z is equal to 0.1 plus 0.2. It is 0.3. So this is actually the answer of L. Is it clear? In minus also I think you can write. अगर minus होता तो कैसे लिखते हैं इसको? यहीं पे कर लेते हैं. Suppose your L1 is equal to 1 plus minus, I have to write here plus minus, clear? Plus minus 0.1 and L2 is equal to 2 plus minus 0.2, and suppose your L is L1 minus L2. Well, I think 2 is greater, but I give L2 minus L1. So 2 minus 1, what is the answer then? 1 plus minus, and absolutes are always add. So I will write 0.3. Is it clear? Okay. In multiplication it is also very simple. If you need some example, suppose your one of the observation is 1 plus minus 0.1, another observation is 2 plus minus 0.2. Where multiplication 2 1 ja 2 plus minus, but here it is not like this. Is it right? So first you have to write separately the del z by z is equal to relative. So इसका relative कितना होगा? 0.1 by 1 plus 0.2 by 2. I think here if you remove 1 by 10 है ना, ये भी cancel 1 by 10. तो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 1 by 10, and here also it is coming 1 by 10. 1 by 10, 1 by 10 is 2 by 10, that is 1 by 5. So it is del z, but z कितना निकला था तुम्हारा? 2. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा del z by z. z जो 2 निकला था इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ. So now 2 divided by is 0.4. So I will write here it is 0.4. So first you find del z by z. After that you can easily find out the z. क्योंकि z जो था मेरा वो मेरा 2 था. 2 को मैंने यहाँ डाल दिया. In division also you can do it. Thank you.